guys, welcome to DesiGirl Traveler and welcome to yet another episode of History, Heritage Festivals and Handlooms of India. Today I am at the cultural capital of Karnataka, the enchanting city of Mysore. From majestic palaces to colorful markets, this place is a perfect blend of history, culture and local experiences. So let's dive in. There are so many things which you can do in Mysore, but first and foremost, let's indulge in a very good breakfast, and I have a recommendation. The place is called Mailari Dosa, मैसूर स्पेशल डोसा, और लोगों का कहना है कि ये डोसा बाकी के जितने भी डोसा मैंने आज तक अपनी लाइफ में खाए हैं उससे अलग है और उससे ज़्यादा टेस्टी है. सो आई एम एट दिस प्लेस कॉल्ड विनायक मैलारी डोसा. दिस इज़ द ऑथेंटिक वन एंड दे आर सर्विंग द डोसा सिंस लास्ट 80 years. This place is in Nazirabad area. Let's have the breakfast and उसके बाद we will start exploring Mysore city. They say that Mailari dosa is different. It is actually different. The taste and the shape of it. बाकी जगह जहाँ भी आप डोसा खाते हो, it's very big डोसा, thin spread. But ये वाला जो है, it's like थोड़ा मोटा और taste is definitely different. I love this one. It's crispy. मज़ा आ गया. So the cost of one dosa is 55 rupees and 15 rupees for filtered coffee. Totally loved my experience here and I recommend it too. So this is the original Mailari dosa restaurant और इसका ये branch इन्होंने open किया है, which is that one. Because this place used to be super crowded, तो ज़्यादा comfortable space के लिए they have opened the other one. How will you recognize the authentic and the original Mailari dosa restaurant? It's next to the Giri Coffee Works, and I'm saying this because there are so many copies of this restaurant and everybody claims to be the authentic one. Make sure you go to the original one. This is Chamundeshwari Temple, the famous temple in Mysore. This is on Chamundi Hills और काफ़ी famous जगह है मैसूर में. यहाँ पे आने के लिए you have two options. You can either come by climbing the stairs. कुछ 1000 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, लेकिन अब एक नया रास्ता बन गया है तो आप ऑटो से या बस से भी आ सकते हो. इस टेम्पल की हिस्ट्री से ही मैसूर या मैसूरू शहर का नाम मैसूरू पड़ा है. लेट मी एक्सप्लेन. सो ये चामुंडेश्वरी माता, दुर्गा माता का एक रूप, और ऐसा कहते हैं कि दुर्गा माता ने महिषासुर का वध यहाँ पे ही किया था. सो महिषासुर के नाम पे ही इस सिटी का नाम पहले महिषासुर और समथिंग था. फिर ब्रिटिश ने उसको मैसूर बना दिया और बाद में इस सिटी का नाम मैसूरू बन गया. तो यहाँ मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है. So this is the main temple और यहाँ पे you have two kinds of ticket. एक तो normal है, अगर भीड़ को avoid करना चाहते हो तो you can buy a special entry tickets for 100 rupees.
So this Chamundeshwari Temple was built in the 12th century और काफ़ी यूनिक आर्किटेक्चर इस टेम्पल का. Behind me you can see महिषासुर और इस असुर का वध किया था दुर्गा माता ने. तो ये था चामुंडेश्वरी माता का मंदिर, शक्तिपीठ है ये. तो जब भी आप मैसूर आओ यहाँ पे ज़रूर से ज़रूर आना. This temple gets very crowded in the afternoon, so if possible come here in the morning time. 6 o'clock कुछ ये टेम्पल ओपन हो जाती है. तो जितनी सुबह आप आओगे उतनी कम भीड़ आपको मिलेगी. I'm standing right in front of the crown jewel of Mysore, the Mysore Palace. यहाँ आने के लिए बहुत सारे गेट्स हैं. I think 4 गेट्स है, लेकिन वराह गेट है जो वो मेन गेट है विजिटर्स के लिए. इस पैलेस के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है. मे बी दे कैन अलाउ द फोन. So let's enter. We have to buy a ticket and the ticket is going to cost us 100 rupees. So I've got the ticket. एक चीज़ है यहाँ पे UPI नहीं चलता. तो you will have to have cash with you to buy the tickets. इस चीज़ का ध्यान रखना. No card or UPI. Only cash. So this palace was built in 1912 and almost 42 lakhs rupees were spent back then in making this palace. So you can imagine how huge and enchanting it must be from inside. एंड यहाँ पे संडे को पब्लिक हॉलीडेज़ पे और ऑल्सो दशहरा के टाइम पे कुछ 97,000 बल्ब्स जलाए जाते हैं. काफ़ी खूबसूरत लगती है जगह. आज मंडे का दिन है, मैंने मिस कर दिया. वो इल्यूमिनेशन मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी. लेट्स गो इनसाइड द पैलेस एंड सी हाउ इट लुक्स लाइक. The Mysore Palace, also known as the Amba Vilas Palace, was originally constructed in the 14th century by the Vadiya dynasty, who ruled the kingdom of Mysore. The architecture of this palace shows a blend of Hindu, Muslim, Rajput and Gothic styles, creating a stunning fusion of aesthetics. The history of Mysore Palace dates back to the 14th century when it was a wooden structure. The palace underwent significant renovations after a fire in 1897 destroyed the old wooden palace. The reconstruction was overseen by British and the current palace was completed in 1912. From the Darbar Hall to the Kalyan Mantapa, every corner of Mysore Palace reflects the splendor of royal living and luxury. It's no wonder this palace is often held as one of the most beautiful palaces in India. Beyond its architectural beauty, the Mysore Palace is a vibrant hub of cultural heritage. It plays host to various festivals and events throughout the year. Mysore Palace is a true symbol of Karnataka's rich heritage. So the camera is not allowed inside the palace. None of the tripods या फिर mic anything is allowed. मैं बाहर आ चुकी हूँ पैलेस से. So यहाँ आने के लिए at least 2 घंटे का टाइम रखना because it's huge. Now it's the lunch time and I have come to this place called Triple R restaurant. ये जगह वैसे वेज खाने के लिए काफ़ी फेमस है, बट यहाँ की बिरयानी भी काफ़ी ज़्यादा I have heard कि अच्छी है. So let's try and see if I like it. 2 रेस्टोरेंट है ट्रिपल आर, एक पुराना एक नया. मैं फ़िलहाल अभी नए वाले में बैठी हूँ क्योंकि पुराने वाले में लिटरली ऐसी वाली भीड़ लगी हुई है. एंड ये सारी जगह जहाँ जहाँ मैं आपको खाने के लिए रेकमेंड कर रही हूँ, they get over crowded. So make sure you come early. So the food is here. मैंने चिकन बिरयानी ऑर्डर करी है और आयुब जी ने वेज थाली. उन्होंने बोला दोनों ही चीज़ें काफ़ी अच्छी है, प्लीज़ खाइए. Nothing too different, but it's tasty. Okay, so paid 440 rupees for the meals for 2 people. Now let's go and have some coffee. I have asked Ayub ji, my auto driver, to take me to some filter coffee. Thank you. I want to have some filter coffee.
मैसूर इज़ ऑल्सो वेरी फेमस फॉर इट्स सिल्क। ऑल्दो मैं चाहती थी कि मैं आपको वीवर्स के पास लेके जाऊं एंड दिखा सकूं कि मैसूर सिल्क साड़ियाँ बनती कैसे है, बट यहाँ पे किसी भी वीवर्स के पास एंट्री अलाउड नहीं है। सो वी हैव कम टू अ कोऑपरेटिव शॉप, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड शॉप, सो यू कैन गेट द गुड प्राइस। हाउ मच इज़ इट फॉर? 16,000, 17,000. 16,000. This is for how much? 9, 10. 9-10,000. मेरा बजट थोड़ा हिला हुआ है। आई हैव डन लॉट ऑफ शॉपिंग इन कांजीवरम साड़ियाँ खरीदने के लिए कांचीपुरम में इससे पहले, तो आई एम जस्ट गोइंग टू पिक समथिंग फ्रॉम हियर। I've become such a huge fan of this color. This is for 3,500. I'm gonna keep it. This looks so rich and sophisticated. I'm on a mission to own one sari from every state of India. Now I own a Mysore silk also. इससे पहले कांजीवरम साड़ी I bought, then I bought Kandangi साड़ी in Chettinad. उससे पहले सुंगड़ी साड़ी इन मदुरई, देन आई बॉट कसवो साड़ीज इन केरला. सो मेनी कलेक्शन आई हैव. टोटली लविंग कलेक्टिंग ऑल दिस थिंग्स. दिस इज द दशहरा स्पेशल साड़ीज ऑफ मैसूर. I genuinely wanted to go to the weaver's house and see how they do the weaving, बट पता नहीं क्यों यहाँ पे ही अलाउ नहीं कर रहे हैं. पूरे इंडिया में इतने ज़्यादा हैंडलूम्स की वीडियो मैंने बनाई है, बट मैसूर में वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं हो पा रही है. अपार्ट फ्रॉम द साड़ीज़, मैसूर इज़ ऑल्सो फेमस फॉर सैंडलवुड. तो इस शॉप में सैंडलवुड की बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट आइटम्स टू सोप, ऑयल एंड एवरीथिंग. टिप इज़ दैट यू गो टू द shops which are like government owned shop, government cooperative and all, तो उसमें आपको चीज़ें सस्ती मिलेगी, so you won't be looted. बस यही एक टिप मैं दे सकती हूँ. ये देखिए धूप स्टिक है सैंडल का. Okay. 200 का आता है, पूरा 4 डजन आता है. ये प्योर सैंडल ऑयल और पोडा से बनाते हैं. So I'm just taking this sandal धूप, और मुझे एक्चुअली धूप से काफ़ी एलर्जी होती है, धूप बत्ती से. तो I'll see at home if this is something I am not allergic to. So got one sari and a sandalwood product, total for 3,698 rupees. That's my shopping in Mysore. This is called Saint Philomena Cathedral. This church was built in 1936 and it's a Gothic style architecture. This one looks so different. And अब तक तो आप लोग भी बोर हो चुके होंगे मेरे इस डायलॉग से कि this is so beautiful, so beautiful. मैं क्या करूँ? Everything is so beautiful in South India. This church has been featured in a lot of Bollywood movies. अमर अकबर एंथनी जो पुरानी मूवी है उसमें भी इस चर्च को फीचर किया गया था. Beautiful. देसी गर्ल ट्रैवलर. देसी गर्ल ट्रैवलर. Okay. What is so special about this church? So this is one of the tallest churches in Asia. तो I feel अगर इसको मैं एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से कंपेयर करूँ ना, तो कम से कम 30th फ्लोर तक होगा. मज़ा आ गया. आज का ये सारा दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है. और बिग थैंक्स टू आयुब जी, सुबह सुबह मुझे मिल गए. इनका मैं नंबर डाल दूँगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. कभी भी आप मैसूर आओ एंड इफ़ यू वांट टू टेक अ टूर ऑफ द एंटायर सिटी, आप इनको कॉन्टैक्ट कर लेना. अब भाई किसी भी सिटी में आई हूँ तो वहाँ के लोकल बाज़ार जाए बिना मैं कैसे वापस जा सकती हूँ. तो मैसूर के एक फेमस बाज़ार में मैं आई हूँ, देवराज मार्केट. तो किसी भी जगह के एक लोकल मार्केट में या फिर होलसेल मार्केट में जो भी चीज़ें मिलती हैं, इट्स सेम लाइक दैट. एंड किसी भी सिटी का एक लोकल बाज़ार घूमना मेरा काफ़ी फेवरेट काम है, क्योंकि एक जगह की एसेंस आपको समझ में आ जाती है जब आप वहाँ के लोकल मार्केट में जाते हो. पर यहाँ पे मैं एक डिफरेंट रीज़न से आई हूँ. मैसूर पाक जो कि फेमस मिठाई है मैसूर की, वो लेने के लिए आई हूँ. This place is
called Guru Sweets, and this is the most famous place where you can have Mysore Pak, the mithai which originated from Mysore king के टाइम से कुछ 200-400 सालों पुरानी मिठाई है। यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा लगती है। ऑल्दो ये बहुत सारे फ्लेवर्स में अवेलेबल है, बादाम मैसूर पाक, जैगरी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, बट जो सबसे बेसिक वाला मैसूर पाक है ना, दैट वी शुड ट्राई, जो कि लिटरली घी और बेसन से बनती है। दिस मिठाई मैसूर पाक वाज इंट्रोड्यूस्ड इन मैसूर इन द ईयर 1935। थैंक यू। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, तो मैं तो अभी ये खा नहीं पाऊँगी, पैक करके लेके जा रहे हैं। बट एज दे से सेवर मैसूर पाक, द पीस ऑफ नॉस्टैल्जिया ऑफ रॉयल्टी। आई एम गोना गो बैक टू माई हॉस्टल एंड ट्राई दिस। सो गाइज, दिस इज़ इट फ्रॉम मैसूर। हमने यहाँ पे अच्छा खाना खाया, बहुत सारी साइट सीइंग करी। अच्छा, मैंने इस पूरी के पूरी सीरीज़ में ना ज़्यादा कुछ होटल्स के रिकमेंडेशन नहीं दिए हैं, बिकॉज आई वाज स्टेइंग एट बेसिक होटल्स एंड ऑल विच आई बुकड ऑन booking.com। यू गाइस कीप आस्किंग मी कि प्लीज़ होटल्स के रिकमेंडेशन दे दो, तो आई ट्राई एंड गिव इट वेन एवर पॉसिबल, और बाकी कुछ बेसिक सा होता है तो आई अवॉइड इट। बट इन मैसूर आई फाउंड दिस प्लेस which is such a beautiful place. It's a hostel. Now I am not somebody who prefers to stay in a hostel, but the good thing about this particular place is that they have private rooms as well as dorms, so you have everything in budget, and also if you're looking for privacy, then you have a private room. So let me give you guys a proper tour of this place. So the name of this hostel is Borbo Stay for Backpackers and Yogi. Now let's go and take a tour of this place. As soon as you enter this place, you get such nice vibe. So this is the common area, and from here only you get inside the dorm room. This is a 6-bed dorm, and it's a mixed one. Ample space for lockers, a full mirror. What I liked about this place is it is at a very prime location. मैसूर में जो साइट सीइंग के लिए लोग आते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ से काफ़ी पास है, and this particular area has a lot of good cafes, yoga centers, so it is an apt place for any backpackers or people who want to spend time learning yoga. This is my private room. It's huge. प्राइवेट रूम का समथिंग अराउंड 2000 विल कॉस्ट यू, बट डॉर्म्स आर अवेलेबल फॉर 650 रुपीज़ और समथिंग। किसी भी प्रॉपर्टी में, किसी भी होटल, हॉस्टल, होम स्टेज में ना सीजन वाइज प्राइस चेंज होते हैं, तो अभी के टाइम पे दिस इज़ द प्राइस। या तो प्राइस बाद में इससे कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो यू कैन ऑलवेज चेक। सो आई एम गोइंग टू पुट द डिटेल्स अबाउट दिस प्लेस इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन बिलो। दिस इज़ द किचन, इट्स कॉमन किचन। यू हैव अ फ्रिज हियर, देन यू हैव अ माइक्रोवेव। सो टुडे इट्स बीन 24 days of me traveling across South India, तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल के बाद I literally miss my अदरक वाली चाय. At this place I have been able to make chai, and I never had time to cook, otherwise I would have definitely done cooking etc. But it's a nice place, all the facilities, and it's also apt for people who want to stay longer. Proper एक vibe है इस जगह की, beautiful, and you guys can totally understand why I like it, because I like very calm places, and this is one of those places. And if you're traveling solo, you can meet fellow travelers here, make friends, and then you can explore the city together. I love this place so much. Although this was not the first time I came to Mysuru, I studied in Bangalore, तो मैं कभी कभी मैसूर आती थी, but city के अंदर कभी इतना tour मैंने नहीं लिया. And my first impression of Mysore this time was like, wow, what a calming city. And the moment I entered this place, loved it. अब इससे ज़्यादा बोलूँगी तो आप लोगों को लगेगा कि मैं क्यों इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा तारीफ़ इसलिए कर रही हूँ because this place deserves that. तो whenever you come to Mysore, choose this place. It's just my suggestion, rest your decision, but you will love it, I promise you.